Now that our first layer of gears is dried, let us start painting. I'm using burnt sienna and ochre yellow acrylic paints. You can take chalk paints as well. And we also need a black paint for the base first. So that is the reason I was telling in video 1 that whenever you are investing in some gesso, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ के लिए जेसो ख़रीदना है तो आप ब्लैक जेसो ख़रीद सकते हैं, तो आपको ब्लैक पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप रेगुलर बाकी प्रोजेक्ट्स में भी जेसो यूज़ करने वाले हैं तो वाइट कर सकते हैं. एंड अगर वाइट जेसो लगाया हुआ है तो वाइट के ऊपर पहले हम ब्लैक पेंट कर लेंगे. अगेन एनी एक्रेलिक पेंट विल डू, और इवन chalk colors work really well. सो आप किसी सिंपल ब्रश या जो वो स्टिक वाला स्पॉन्ज आता है, आप वो स्पॉन्ज से भी पेंट कर सकते हो. एंड ध्यान ये रखना है कि ये जो गेयर्स है, गेयर्स की जो डिज़ाइंस है वो काफ़ी कॉर्नर्स एंड एजेस वाली होती है, तो कहीं पे भी ये वाइट पार्ट दिखे नहीं. सो दैट्स द मेन स्टेप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट दैट, because the white part will be immediately visible. And the reason we are using this black color is because we want to give a rustic look and not a fresh look. तो जहाँ fresh look होता है वहाँ पे we tend to use white. And for rustic, the base turns black. This is the black Liquitex which you can use instead of gesso and paint. But it will be matte. That's okay. So do this for the whole layer. Again, front, inside, back. आप ये जो एम्बॉसिंग किया हुआ है स्टेंसिलिंग का, उस पर भी यही चीज़ करेंगे. And since it is embossed, it will give the layer. Cover it up really well. Also behind, again this will not take time to dry, but it will definitely need some 5 minutes drying step in the between, as you need to paint everything. So once everything is painted, make sure there are no white spaces anywhere from the sides. You can check it in all the directions. Once dried, let us go ahead with the next step. So the next step will be taken up with by using sponge. I take a big piece of sponge and cut it in small parts, and I'm going to use this burnt sienna acrylic paints. Just dab it very lightly, only on the gears first. Take very little amount of paint, and it would be great if the paint is not mixed with water, of course. Use one small piece of sponge for one color. Alright, and you need to just go on dabbing it like this. Sponge से ये step करना इसलिए ज़रूरी है because when you dab with a sponge, it does not paint flat. और जब आप ब्रश से पेंट करते हो तो वो फ्लैट स्ट्रोक्स में पेंट होता है, और स्पॉन्ज से वो थोड़ा रेज दिखता है, जैसे वो वेलवेट पेपर हो वैसे, उस तरह से. सो दैट इज़ व्हाट वी एग्जैक्टली नीड. आई मीन दैट लुक इज़ व्हाट वी एग्जैक्टली नीड, राइट? वी वांट दिस रफ एंड अ बिट ऑफ रेज्ड look and not a nice creamy and flat look. That's the reason. See, can you see? So that's the reason we need this sponge. Of course, I will repeat this thing that you don't have to take a lot of color. Just take a bit in different parts, and then once the color is laid, keep on dabbing. Make sure you don't spread, मतलब उसको घिसना नहीं है, उसको dab करना है. Okay, only then you get this effect correctly. So do this everywhere, and it should look something like this. Make sure कि पूरा brown ना हो जाए, थोड़ा बहुत black भी दिखना चाहिए, because that is what rust is all about, right? So
Once it dries up, no, you will see this proper amazing rust look just by these two colors.